A very good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, मनोज पाठक। नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Manoj. The top stories. WPI inflation remains in the negative territory for the 7th straight month in October. Key Asian stocks rise today. South Korea's Kospi index rises 1.20%. And oil prices rise today after the International Energy Agency raised its demand growth forecast. देश में अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर लगातार 7वें महीने ऋणात्मक क्षेत्र में बनी रही। एशियाई बाजारों में कुल मिलाकर लिवाली तेज। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% उछला और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा तेल की मांग बढ़ने संबंधी अनुमान व्यक्त करने से तेल के दाम ऊपर आए। देश में अक्टूबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर लगातार 7वें महीने ऋणात्मक बनी रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में अक्टूबर में इस वर्ष थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की दर में 0.52% की गिरावट हुई। गौरतलब है कि सितंबर महीने में 0.26% की गिरावट WPI में हुई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष अक्टूबर में WPI दर ऋणात्मक रहने के मुख्य कारण रसायन और रासायनिक उत्पाद, कपड़ा, बेसिक मेटल, खाद्य उत्पाद, कागज और कागज उत्पादों का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में घटना है। गौरतलब है कि सोमवार को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की दर भी इस वर्ष सितंबर के 5.02% से घटकर अक्टूबर में 4.87% रह गई। यह भी उल्लेखनीय है कि CPI दर अब भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सीमा 6% की नीचे आ गई है। सरकार ने RBI के लिए लक्ष्य दिया है कि खुदरा मुद्रास्फीति की दर को 4% से 2% ऊपर या नीचे के दायरे में रखा जाए। चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे उद्यन आपके माध्यम से कि WPI लगातार 7वें महीने जो ऋणात्मक यानी कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं इसमें हो रहा है, उसके पीछे मुख्य कारक क्या है और ये दर असल अर्थव्यवस्था के लिए क्या दर्शा रहा? देखिए, ये तो जब आप थोक मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं, होलसेल प्राइस जी, तो ये प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो उत्पादक हैं, जो तैयार कर रहे हैं गुड्स, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनके लिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है। और ये बेसिकली यही दर्शा रहा है कि पिछले साल के बनस्पत, जैसे आपने कहा कि इस साल जो कमोडिटी प्राइसेस वगैरह दूसरी चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ी सी रैशनलाइजेशन हुई है, तो वो दिखाता ही है। दूसरी बात है कि हम जो पैंडेमिक का वक्त था उसमें एक सप्लाई जो आपूर्ति की जो प्रॉब्लम थी उसके वजह से एक मुद्रास्फीति में एक उछाल आया था। तो उस स्थिति से अब हम नॉर्मल स्थिति की तरफ आ रहे हैं। और जब आप पिछले साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक हाई पॉइंट्स के साथ एक स्लाइटली लोअर पॉइंट को कर रहे हैं, तो उसके वजह से एक नेगेटिव दिख रहा है। तो चलते ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये वाला जो स्टैटिस्टिकल क्वर्क है, जो सांख्यिकी का एक एनोमली है, वो हटता चला जाएगा और उसके बाद आप एक नॉर्मल से फिगर्स की तरफ आप देखेंगे। पर इसमें कोई दो राय नहीं है मनोज की मुद्रास्फीति जो है एक एलिवेटेड लेवल से, ऊंचे लेवल से वो एक गिरावट आ रही। तो गिरावट का मतलब प्राइस की या मूल्यों में गिरावट की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को कहेंगे कि मुद्रास्फीति आप कह रहे हैं और आप पहले से ज़्यादा
जिस दर में बढ़ रहा है वो उसमें उसमें कमी आती जा रही है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि जब दर में कम उछाल होता है तो उसमें एडजस्टमेंट करना आसान होता है। किसी चीज़ में एकदम से उछाल आ जाए, स्पेशली मुद्रास्फीति में, उस हिसाब से आपके आय में वृद्धि नहीं होती, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। पर ये एक लार्जर एक बड़े पिक्चर को अगर आप देखें तो ये जैसे कि आपने कहा कि जो खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन है उसकी भी फिगर्स में तो एक ओवरऑल एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि वो जो प्राइस का जो सिचुएशन है वो मोर और लेस अब एक ऐसी स्थिति में आती चली जा रही है जहाँ पे वो एक मेजर चिंता नहीं है। पर क्या इसका हम मार्केट मंत्र में बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में, तो मार्केट इसके हिसाब से कैसे देखेगा, तो ये मान के हम चल सकते हैं कि मार्केट को मुद्रास्फीति से जो चिंता आती है वो चिंता उतनी नहीं होगी, जबकि एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है कि अभी भी जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल गई नहीं है, क्योंकि और वो रिटेल इन्फ्लेशन वहाँ पे प्रेशर जो आपके खाद्यान्न हैं, जो सीरियल्स हैं या एक दो चीज़ें और हैं, जैसे जैसे आपको खरीफ के रिजल्ट समझ में आते चले जाएंगे तो आपको उसका एक हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव बन जाए। पर ये मनोज ये साइकिल्स हैं, खरीफ के बाद राबी और वो कुछ महीनों के बाद वो फिर रैशनलाइज हो सकता है। तो ये जो कुछ जो चीज़ें थी ये ओवरऑल तो ये दिखा रही कि ये एक एरिया ऑफ कंसर्न, जैसे दूसरे देशों में मुद्रास्फीति अभी भी चिंताजनक है, कई जगह में कम हुई है पर उतनी नहीं हुई है और जो आम नागरिकों को काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। हमारे देश में हम भारतीयों को एक स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन लेवल की आदत पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से ये जो आपने 4 से 6% आरबीआई का सीपीआई का खुदरा इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का उस रेंज में होना हमारे लिए अश्योरिंग है, तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। Well, then you also made a mention about the Kharif crop, but you know there have been concerns about the yield of Kharif crop because of the erratic monsoon and also the El Nino impact. So what do you think, you know, moving ahead, will we be able to see some impact on that, and as a result, you know, inflationary expectations? Yeah, that's a good point, Ranga. What the report seems to be indicating that there might be a little bit of an effect. Now, how much will that be? It's very difficult to say, simply because there's so many crops, this and that, and sometimes, you know, internalizing that whole thing is not so easy. But so that's why they are saying that, experts saying that there will be a pressure, but it's not going to be a runaway kind of a thing. And then, Ranga, these are all cycles. You know, the next cycle comes in. Okay. So maybe if the Rabi is a good one, then maybe it can smoothen up a little bit. But what that does is, Ranga, is that what people are saying that this possibly means that RBI is probably not going to tinker around with any kind of rates. They're going to leave it at where they are. For us it's important because rate hike or cut was never part of the conversation to begin with. Right. But what it does is that you're not going to get a negative surprise. This is very different, Ranga, from what the situation is there in the US, where the Federal Reserve continues to say that if we see a spike in inflation rate, then we might do a rate hike. Yeah. No such conversation, mind you, is happening here. Okay. So which shows that part of our macro seems to be coming under the range. And there the policy is quite hawkish. Yeah, there the policy is hawkish because they have been, Ranga, they have been used to 2% inflation rate. I mean, they hardly used to clock that much. I mean, that's unthinkable here. But then, Ranga, we also clock higher growth rates. So you know, so I don't higher inflation, higher growth. Yeah, so sometimes that those things one has to keep in mind. But that's for the listener of this program, it's very important to point that out. You know, there's a lot of difference. So the government can, I mean, I don't know whether it is, but it can actually claim that they have been more prudent
when they were managing the finances during the pandemic. That's true. Because there are many other countries who had to dole out a lot of things, who had to go all out, and now they are having to, somebody's got to foot the bill. So the government can actually argue that they were more prudent, Yeah. and therefore their inflation containing measures have not been as damaging as in some other countries. Yeah. Well, then let me also draw your attention to the fine print. The CPI figures were released yesterday. In that, pulses inflation has gone up to almost 19%, whereas earlier it was 16.4%. So 19% price rise in pulses, despite a number of steps being taken by the government. We talk about the yellow revolution, about pulses. Despite that, it seems the production has not moved up to see to it that prices cool down. Yeah, Ranga, there are quite a few of these. Underbelly is a harsh word. Spots that we could do better. There are areas, and there are lots of places from where we import pulses. Canada is one of them. I don't know whether that has impacted things or at all or not. So I don't have any information or understanding. So there are all these like sunflower oil, potash, and all these things. There's conflict going on. So it depends on from where we are importing these things and how the supply has been. Yes, the fundamental point is well taken that domestically we should be ideally we should be doing better, but unfortunately we have not been able to do that to our satisfaction. A. B is when we import sometimes because there's a disruption globally going on, you're not quite sure what's going on. Somewhere it's an excess, but somebody's probably put it down, or somewhere the freight is not moving. So there are things that sometimes you want to ameliorate the situation, but you're not in a great position to do it. So all these things might be at play. उदिन यहाँ पर इसी क्षेत्र को लेकर और कह लें कि इन्हीं चिंताओं को लेकर दलहन और तिलहन, ये दो उत्पाद हैं जिनका हमें, क्रूड ऑयल का तो हम बड़े पैमाने पर आयात करते ही हैं, लेकिन खाद्यान्न तेल का भी हमें आयात करना पड़ता है। इसी तरह दालों का भी आयात करना पड़ता है। क्या नीतिगत स्तर पर जिस तरह एमएसपी का प्रावधान मोटे अनाजों पर हैं और उनका उत्पादन, जैसे अभी हम प्रदूषण की स्थिति को दिल्ली में देखते हैं और उसके कारक मुख्य रूप से होते हैं कि फसलों की जो उत्पाद हैं, जो रेसिड्यू है, उसको जलाया जाता है, तो क्या यानी हमारी जो एमएसपी की नीति है उसमें खाद्यान्न पदार्थों में तिलहन और दलहन को उस रूप में जोड़ने की आवश्यकता है, और उसके लिए सरकारी तंत्र के स्तर पर वैसा ही अभियान जैसे चावल की खरीद के लिए या कह लें कि गेहूं की खरीद के लिए अभियान चलता है, वैसे ही हमें दलहन, विशेष रूप से जो अरहर की दाल है, वो बड़े पैमाने पर, आपने सही कहा कि कनाडा से या अन्य देशों से, बर्मा से, कई देश हैं जिनसे हम आयात करते हैं, और वहाँ की स्थितियां यदि बदली तो भुगतना हमें पड़ता है। वहां पर नीतिगत स्तर पर हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास तो किए गए हैं और किए जा रहे हैं, पर मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि इसमें आपको एक संतोषजनक मैं आपको जवाब दे सकूं। पर इतना मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर काम बहुत दिनों से चल रहा है। आपको याद होगा 31 साल पहले हमारे ये एडिबल ऑयल्स मिशन बना था जी। तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम किया नहीं गया है या आइडियाज़ नहीं है, पर कई बार क्या होता है मनोज, वो एफर्ट्स जो है ना वो फ्रक्टिफाई करने में वक्त लग जाता है, परिणाम उनके निकलने। जैसे पाम ऑयल अगर हम चाहें, जो कि हम इंडोनेशिया से बड़े पैमाने पर मंगाते हैं, तो पाम के अगर आप प्लांटेशन भी बनाते हैं, उस पेड़ को तैयार होने में ही कई साल लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। फिर वो आबो हवा की भी बात है, फिर कई बार आप सब्स्टिट्यूट का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इसमें ऑप्शंस नहीं है। मान लीजिए दूसरे देशों में भारत या भारतीय कंपनी फार्म्स कर
सकती हैं उन देशों में, वो तैयार करके हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकती जी, हैं। जी, जी, और जो कि एडिबल ऑयल्स के और दूसरे एरिया में ऐसे काम हो रहे हैं। और मुझे पता नहीं कि वो ज़मीनें ली गई हैं कि चीन जो है ये काम ज़रूर कर रहा नहीं, है। भारत की ओर से भी कुछ कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं जिन्होंने अफ्रीका जी। के कई देशों में के जी। साथ तालमेल करके जी। दालों का या अन्य उत्पादों का बिल्कुल। वहां उत्पादन करके फिर यहाँ आयात बिल्कुल, कर तो रहे हैं। वही शायद वो प्लस हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी है, गुणवत्ता है, जिस तरीके से हम प्रोक्योर करते हैं, जिसके विषय में आपने बोला, और शायद वो बेहतर कर सकें। और अब क्योंकि सारा कुछ डिजिटाइज हो गया है, जी, तो मतलब फार्म से, मतलब खेतों से जो उपभोक्ता तक का जो सफ़र है, जी। उसको और स्मार्ट और बेहतर किया जा सकता है। तो ये ज़रूर इसके ऊपर हो रहा है, पर ये हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, पिछले 2-3 साल काफ़ी गैर मामूली रहे थे। तो उसके पीछे चलते ये कुछ चीज़ें जो हैं वो जाते जा रही हैं। जब भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई पॉलिटिकल या दूसरी ग्लोबल क्राइसिस सामने आ जाती है, जो हमें उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ी सी देर कर रही है, विलम्ब कर रही है। Yeah, and Udin, to talk about the Reserve Bank of India, as we have been discussing, has a target of 4% and plus minus 2% for inflation. Now that it is within that range, can we expect in the next bi-monthly monetary policy for the Reserve Bank to keep the interest rates without any change, unchanged? Ranga, that's what the expectation is now. But markets are not going to be satisfied with rates being kept the way it is. Okay. Whether it's Indian markets, They want a cut? yeah, that's what they want. So that's the what should I say? That's what they're looking for. The moment they get a hint, I can assure you it'll be a runaway kind of a situation. While a lot of people in the West, especially in the US, have completely ruled out a rate cut in 2024, that is not the case in for India, because if you get price stability, Yeah. and your currency is also in a decent scene, there is absolutely no reason why you might not look for a lower cost. Yeah. This is But would you say that the interest rates have kind of peaked out, and maybe it's just a matter of time before the downhill starts? Well, if you see, Ranga, although there are other dynamics out there, but if you look at fixed deposit rates, that keenness to lure people with very high paying FDs, that seems to be on the wane. You would see that compared to, say, somewhere around April, May, June, now your fixed deposit rates are a little lower. Yeah. So it's not necessary. Sometimes it is just because you want to balance out, because you have to take money from depositors and lend. So those dynamics are there. But overall, if you see that intent is, if that be an indicator, and albeit imperfect indicator, then it's already showing that, and if you don't see home loan rates also going up, then that also is showing that okay, at some point it's like stabilizing and things will. But would you like to take hazard a guess as to by when can we expect a cut in interest rates? I would say that if things macros remain okay, which I would expect them to remain okay, unless we have another conflict coming up, and we can't handle so many global conflicts. Bar that, I would say somewhere in the second half, maybe in the somewhere around this time 2024, in the last 3 months calendar year, that might be just a pretty good time for us to expect a rate cut. Yeah, of course, if our economy doesn't do as well, and there's a demand suppression, and automatically inflation is falling off because of a demand compression, then RBI might do it even earlier. But this is very, as I've continued to point out, this is very different from the situation in the West, where the inflation is high and they're still talking about a rate cut or rate hike. Sorry. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण आज बंद हैं। हम चलते हैं सीधे वैश्विक शेयर बाजार की ओर। Let's take a look at the Asian and European markets. Key Asian stocks rose today as market participants were optimistic
about highly anticipated talks between the US and China. South Korea's Kospi index jumped 1.20%, China's Shanghai Composite Index and Japan's Nikkei 225 rose 0.3% each. On the other hand, Hong Kong's Hang Seng ended 0.2% down and Singapore's Straits Times Index declined 0.1%. European markets were also trading higher in intraday trade. Germany's DAX was trading 0.5% up, while France's CAC 40 was trading with 0.20% gain when reports last came in. On the other hand, London's FTSE 100 was trading at 0.30% lower. Although, our stock markets, domestic stock markets were closed today. But then what would you say? In the past couple of months, we haven't seen the Sensex move forward in an emphatic manner. Earlier, if you remember, some 2 months back, it was, growing by leaps and bounds and was close to, 68,000. It was actually 68,000 and people were guessing that probably by Diwali it would cross the 70,000 magical mark, but that didn't happen. Yeah, Ranga, a lot of dynamic global factors come into play. So, if American debt markets they start looking attractive, which they did, the yields went up and all that. Then what happens is it's a low risk market, Ranga. Do you remember? And an institutional investor has got money and they can invest in different markets, equity markets, whether it's India, Brazil, US, and so on and so forth, or they can invest in debt of different countries. They can invest in commodities. Sovereign wealth funds can do so many things. So there's a whole lot of choice. So depending on how things look, so if for instance US debt markets they start looking interesting, they look more remunerative, then people will move in there, and that is number one threat to markets like ours. Our equity markets versus US debt markets is actually we are competing in a certain way. And if you look at the times when we haven't done well in the past maybe 18 months or so, every time the yields out there have gone up, everything has been under pressure, whether it's our currency or our equity markets. I could be wrong in terms of 100% correlation. The correlation has been pretty high. So that's what people would think, that okay, I've got a low risk here and I can earn this, and here is an emerging market, there's a currency risk, there could be a macro risk, there could be a political risk. So they factor all that in. So that is sometimes what happens. These things come into play. Sometimes you just want to rotate the countries a little bit. Sometimes you want to show a certain, you want to book profits because you want to show it to your board. Okay. Yes. So all these factors come in. But in terms of index, yeah, you're right. I mean, that run away doesn't always, is unlikely to happen always. Because, see, Ranga, what happens is you have Nifty 50, then there's another 50. So you got 100. They are fairly large companies. And when people get interested, and India is a very high interest country still, and so people will keep investing. At some point, you're pushing them up. True. The valuation or whatever ladder. So at some point you start wondering where next to go. Then you go to the next one. Then you finish them as well. So the question is, as you keep moving ahead and ahead, what happens is the liquidity becomes an issue at some point. That's true. So you wouldn't want to get into those stocks where liquidating them might be a challenge. So when there's a gush of money comes in, and mind you, we are clocking pretty decent SIP flows also, systematic investment plan. So my sense is that at some points these things get stuck by these factors, sometimes investment candidates, sometimes global factors, sometimes your competition with other asset markets. So it's not a very straightforward play. यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन यानी कह लें हमारे श्रोताओं के लिए ये निकल के आता है कि जब सब कुछ सीधा यानी सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना दिखे तो हमारे जो श्रोता हैं, निवेशक हैं, उनके लिए निवेश के क्या ऑप्शन दिख रहा है अभी के माहौल में, जहां एफडी अच्छा यानी कह लें कि विकल्प देते दिख रहे हैं, शेयर बाजार उतार चढ़ाव बढ़े दिख रहे हैं, सोना पिछले एक वर्ष में
बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, तो वैसे में निवेश ये जो हमारे श्रोता हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, निवेश जो है, सबसे पहले निवेश आप ये तय कर लें कि किस चीज़ के लिए निवेश कर रहे हैं। देखिए, जो ट्रेडर है वो तो खरीद फरोख्त करके वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, पर जो निवेशक है वो अपने कोई बात, कोई चीज़ को पूरी ख्वाहिश होगी, कोई गोल होगा जिसको वो पूरे करने के, या घर खरीदना है, रिटायरमेंट, बच्चों का कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेजना है, तो अगर तब आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदा, या कोई अगर अच्छा शेयर रिसर्च करके या आपको एडवाइस मिल रही है फिर आपने खरीदा, तो आप उसमें बने रहना होता है। और अगर आप उसको करते हैं तो उसमें मार्केट जहाँ मर्जी जाए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बताता चलूँ बिफोर, मतलब उत्तर को ख़त्म करने से पहले, आप बने जब रहते हैं तभी आप बेनिफिट करते हैं। ये पाया गया है, भारत में भी पाया गया, विदेश में भी पाया गया। जब आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, मेरा मतलब है कि आप निकल जाते हैं मार्केट से, जिस वक्त आप निकलते हैं और जब वापस आते हैं उसमें जो आपका नुकसान होता है और जो बने रहते हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए आप बहुत कुछ सोचने की कोशिश ना करें कि ये क्या होगा, वो एक बार कर दिया। और ये याद इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये याद बताते चलें कि 100 रुपये का अगर रिटर्न होता है, 90% तो आपके बने रहने से ही बन जाता है। Right. Let's move on and take a look at the American markets as well. Key share indices of the United States ended largely flat yesterday as traders adopted a cautious approach ahead of the release of crucial economic data, particularly October's retail inflation data. Dow Jones Industrial Average gained 0.2%, Nasdaq Composite Index declined 0.2%, and the S&P 500 ended marginally lower. आइए चलें कमोडिटी मार्केट की ओर। सबसे पहले सर्राफा बाजार चलें। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने चांदी की स्थितियों पर ध्यान दें। दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य MCX पर अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 39 रुपए घटकर 59,803 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। उधर दिसंबर में ही आपूर्ति वाली चांदी 187 रुपए उछलकर 70,046 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक सोना मजबूती के साथ $1,949 प्रति औंस चल रहा था। चांदी भी मजबूती के साथ $22.41 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। On to crude oil prices. Oil prices rose today after the International Energy Agency raised its demand growth forecast, adding to bullish sentiment from the previous day's OPEC guidance. In intraday trade, Brent crude was trading 0.2% higher at $82.68 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading 0.23% up at $78.44 cents per barrel when reports last came in. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कोयला मंत्रालय कल वाणिज्यिक कोयला खदानों की 8वीं दौर की नीलामी करेगा। 5 राज्यों में 39 खदानों की नीलामी इस दौर में की जाएगी। जिन राज्यों में ये खदानें हैं वे हैं बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 2020 में कोयला क्षेत्र को पहली बार वाणिज्यिक खनन के लिए खोला गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में इसकी नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। And in other news, Union Commerce Minister Piyush Goyal has said that India is an attractive investment destination for the world. At the Investors Roundtable hosted by the Consulate General of India in San Francisco and US-India Strategic Partnership Forum, Mr. Goyal highlighted how India offers promising opportunities for investors thanks to the unique combination of our demographic dividend, manufacturing capabilities and conducive business environment. The Minister of Commerce also visited Tesla's state-of-the-art manufacturing facility at Fremont in California. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a quick look at the top stories. WPI inflation remains in the negative territory for the 7th straight month in October. Key Asian stocks rise today. South Korea's Kospi index soars 1.2%. And oil prices rise today after the International Energy Agency raises its demand growth forecast. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock markets. But for now, from the entire team of Market Mantra, thank you so much for joining us. Goodbye.
Rock